दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by
David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस
मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman,
जेफ मोस्ट, स्टार्टिंग ब्रेंडन ली, अर्नी हडसन, माइकल विंकोट, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $94 मिलियन। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपर नेचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $94 मिलियन। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपर नेचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $94 मिलियन। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography
Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and
John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It starred Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It starred Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It starred Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media
Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the
dared to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time
Women's country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by
David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस
मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman,
जेफ मोस्ट स्टार्टिंग ब्रेंडन ली, अर्नी हडसन, माइकल विंकोट, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jessup, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography
Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Freshman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and
John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surly, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surly, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media
Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994. United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the
dared to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय एलेक्स Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Doe Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. Box office $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Doe Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $23 million. बॉक्स ऑफिस $94 million. सो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं. आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David Jesso and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brendan Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Doe Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102
Women's country United States. Language English. Budget $23 million. बॉक्स ऑफिस $94 million। तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. बॉक्स ऑफिस $94 million। तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David J. Shaw, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films. Release date May 13, 1994, United States. Running time 102 minutes. Country United States. Language English. Budget $23 million. बॉक्स ऑफिस $94 million। तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David J. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James Ubar. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by
David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, language English, budget $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम द क्रो हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रो इज ए 1994 अमेरिकन सुपरनैचुरल सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय एलेक्स प्रियोयास and written by David G. Shaw and John Surley, based on the 1989 comic book series by James O'Barr. It stars Brandon Lee in his final film role as Eric Draven, a rock musician who is resurrected from the dead to seek vengeance against the gang who murdered him and his fiancée। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alex Proyas, screenplay by David Jesso, John Surley, based on The Crow by James O'Barr, produced by Edward R. Pressman, Jeff Most, starring Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, cinematography Darius Wolski, edited by Dov Hoening, Scott Smith, music by Graham Revell, production company Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film, Jeff Most Productions, distributed by Dimension Film, Miramax Films, release date May 13, 1994, United States, running time 102 minutes, country United States, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $23 million, बॉक्स ऑफिस $94 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस
मूवी के रिव्यू को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।